शॉर्टकट्स का यूज करा करो। अब देखो शॉर्टकट्स क्या है, बोल्ड सेंटेंस शॉर्टकट क्या है, सबसे पहले कंट्रोल प्लस ए से पूरा सेंटेंस सेलेक्ट करो, कंट्रोल प्लस ए से सेंटेंस सेलेक्ट करो, आफ्टर दैट ना प्रेस कंट्रोल प्लस बी टू बोल्ड द सेंटेंस। देखो बोल्ड हो गया। अब उसके बाद ना हम लोग को जैसे अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस ए करो एंड कंट्रोल प्लस यू का यूज करो टू अंडरलाइन द सेंटेंस। ओके, इन सब शॉर्टकट्स का यूज करो और अपना टाइम सेव करो। ओके, ना शॉर्टकट से करिएगा, नहीं तो आप लोग को बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। ओके, शॉर्टकट क्या है, कोई भी इंसर्ट करने का टेक्स्ट बॉक्स, देखो सबसे पहले प्रेस करो एल्ट। ओके, एल्ट प्रेस, आफ्टर एल्ट प्रेस, आफ्टर दैट एन, एंड आफ्टर दैट प्रेस एक्स। ओके, इंसर्ट बॉक्स इज इंसर्टेड। ओके, तो हम लोग को डुप्लीकेट करना हो ना तो राइट ऐसे बार बार नॉर्मल मेथड से नहीं करा करो, इससे ना टाइम वेस्ट होता है, ऐसे नहीं किया करो। हम लोग को कौन सा मेथड अप्लाई करना है, डायरेक्ट यूज करा करो कंट्रोल प्लस डी। ओके, कौन सा, कंट्रोल प्लस डी, डुप्लीकेट द स्लाइड टाइम, देन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट कंट्रोल प्लस ए and after that print delete. Now all things are removed at a time from a slide. First of all select all boxes. After that press shift plus F10 and click right menu and go to the solid fill and select one of the color. Okay, that now all the boxes having the same color. Okay, to do border around that this word, then first of all select this word, first select this word, then go to the format shape. Afterward, then go to the text option and then select one of the color, for example red one, and you have see that border is coming. Okay, वो नया शॉर्टकट सीखने वाले हैं कि हम लोग शॉर्टकट से कैसे एनिमेशन लगाएंगे और कैसे डिलीट करेंगे एनिमेशन को। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले प्रेस करिए एल्ट, सबसे पहले प्रेस करिए एल्ट, देन प्रेस ए, एल्ट देन प्रेस ए, select one of the animation, for example I have selected float in. Now the animation is there, see in the slide view, the animation is there. Okay, see in the slide view, the animation is there. Okay, now how we have to remove this animation, select this and then delete, animation is removed. Okay, कि कैसे हम लोग ना पावर पॉइंट में स्लाइड शो करते हैं बाय शॉर्टकट। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले प्रेस करिए एल्ट, देन प्रेस एस, ओके, एंड देन प्रेस एस and then select one of the, okay, one of the slide setup. So slide show from a current slide, then press L, then press S, and then press B. Okay, and then press B. The slide show is from the current and from the beginning one. Okay, from the beginning one. And if you want to do the slideshow from the current slides, for example from this one, then press Alt, then press S, and then press C. Okay, the slideshow is from the current slideshow. Okay, कि हम लोग कैसे पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ डिवाइस वाया शॉर्टकट। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले प्रेस करिए एल्ट, प्रेस एल्ट, देन प्रेस एन, देन प्रेस पी, एंड देन प्रेस बी। ओके, एंड सेलेक्ट वन ऑफ द पिक्चर। ओके, and then enter, picture is inserted. Okay, shortcut is press L, press N, then press P and then D and select one of the again picture and then enter, again one picture is inserted. फ्रेंड्स ना शॉर्टकट का इस्तेमाल करिए ताकि आप लोग ना अपना वर्क एनहेंस कर पाए। ओके, और पावर पॉइंट को पीपीटी को पहले डाउनलोड कर लें एंड पावर पॉइंट में ओपन कर लें। ओके, फिर आफ्टर दैट ना हम लोग कोई भी डिजाइन सेलेक्ट करना है, फिर हम लोग ना कोई भी डिजाइन सेलेक्ट करें और इस पे अप्लाई करना है। देखो अपने आप वाटर मार्क सब में से हट जाएगा, या फिर और भी कोई स्लाइड ले सकते हैं, जैसे कोई भी अगर हम लोग को हटाना है तो कोई भी स्लाइड, स्लाइड चेंज कर, वो डिजाइन चेंज कर दो, अपने आप पावर पॉइंट से वाटर मार्क हट जाएगा। ओके, थैंक यू। कॉपी एंड पेस्ट इज, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू cut this text, okay, control plus X. Shortcut to cut is control plus X, and shortcut to paste control plus V. Okay, now if we want to copy this text, control plus C, what, control plus C, and shortcut to paste is control plus V. Now you see text is pasted. Okay,
Now if you want to save this presentation, the shortcut to save this is control plus S. Now you see that here it is ready, save to this PC. Now if you want to add a new slide in this presentation, so for adding a new slide, shortcut is control plus M. What? Control plus M. The new slide is added. Okay. The recording, then first of all press Alt. Okay. First of all press Alt and then press C and then press R. Okay. After that, when you select the area and then start recording. Okay. For example, this. Now you start recording. Okay. Now, if I don't want to record first, then stop. Okay. So press Alt. Okay. Then first of all press Alt and then press G and then press H. Okay. Select one of the design. For example, I select this one. Now the design has been changed. Okay. If you want to again change the design, then again press Alt. Okay. Then again press Alt. Then press G and then select one another design. For example, same one. Design has been selected. Okay. Then the shortcut to insert a table is first of all press Alt, first of all press Alt, then press X, and after then press T. Okay, and select whatever the column and whatever the number of rows you want. Then select and click. Okay, the shortcut to apply insert a table. Okay, Z. Okay, sorry, Control plus Z. Okay, shortcut to undo is Control plus Z. Okay.